Hi, good morning aspirants. आज आमर कौन डिस्कशन करिबा लास्ट क्लास 2019 और 2020 रो इकोनॉमिक्स सेट हमें कोड देके पीओआई तो आज हमें जिबा ओसीएस 2021 और जो एग्जाम हेतला एग्जाम डेट मु लिखि दीची ते ना अक्टोबर 2022 रे एग्जाम हेतला और ओसीएस 2021 इकोनॉमिक्स सेक्शन कर दबा तो स्टार्ट करिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग items does not comes under GST in India देखो GST ऊपर सब गोटे क्वेश्चन आसे हमें जान दबा जे GST जुलाई 2017 रे आस्तला आर्टिकल 279 ए हला GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर मेंशन अछि 279 ए तो GST को कोथरे इन्वॉल्वमेंट अछि बा कोथरे GST देबा पड़े आ कोथरे GST नाही तो क्वेश्चन आसला जे कहा को जीएसटी रे अंतर्भुक्त करा जाय नाही बट कि जीएसटी जो रिजिम अछि जीएसटी रिजिम रे कि आसंती नाही कि आसेनी ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट हला पेट्रोलियम प्रोडक्ट आसे नाही तो एटा जीएसटी को नै कि सब बेले टिके क्वेश्चन आसे तो जीएसटी ऊपर हम टिके नेट टिके पढ दबा कि करंट अफेयर कि बजट रे कि चेंजेस आछि हम ताको देखिबा तो कौन आसेनी don't covered under GST. The alcohol for human consumption. Alcohol for human consumption does not fall under the purview of the GST in India. Petroleum product, petroleum crude, motor spirit, petrol, high speed diesel, natural gas, aviation turbine fuel, ए सब मध्य कोन GST भितर आसेनी इलेक्ट्रिसिटी पय मध्य कोन GST आसेनी इलेक्ट्रिसिटी रे GST दवा पड़ेनी तो ए सब जिंस देखि कि जीवा तापर देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हे जेटा कोन आउट ऑफ द मनी सप्लाई M1 कोन M2 कोन एमती कोन F4 कोन एटा बारंबार हमें कर सारलेनी तो जते बेले हमें जीवा पढिबा मनी एंड बैंकिंग रे टोटा हमको भलो रे देखिया जेको पड़े जैसे पूर्ण पचार जे पोस्ट ऑफिस सेविंग आर इंक्लूडेड इन कोन जणा हची M2 एंड M4 एते कोन अछि पोस्ट ऑफिस सेविंग अछि मैं क्वेश्चन आ बेसी डिस्कशन करने कारण एटा मते जहाँ मन पड़छि 4 टाइम हमें डिस्कशन कर सारलेनी M0 कोन M1 कोन M2 कोन M3 कोन M4 कोन तो एटा बारंबार आउ डिस्कशन करियार ने एटा बारंबार पढ़ी के मन रखियार अछि ठीक अछि आप देखो which Indian plan accepted the strategy of inclusive growth for the first time हला तो एटा कोन प्लानिंग ईयर गुडा कोन काली कहितली जे फर्स्ट ईयर प्लानिंग सेकंड ईयर प्लानिंग थर्ड ईयर प्लानिंग रे कोन हितला फोर्थ ईयर प्लानिंग रे कोन हितला को प्लानिंग रे नाबार्ड आस्तला 1982 को प्लानिंग रे हमरो सब स्टील प्लांट गुडा को आस्तला कोटा रालकेला रे कोटा हितला दुर्गापुर रे कोटा हितला बोकारो रे को स्टील प्लांट हितला हला को जो हमर प्लानिंग ईयर रे कोन एग्रीकल्चर ऊपरे कोटा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऊपरे इंडस्ट्री ऊपरे ए सब जिंस हमको देखिबार अछि जो प्लानिंग ईयर एटी सेमि पचारछि inclusive growth टा को प्लानिंग ईयर रे इंडियन प्लान माने प्लानिंग ईयर रे एक्सेप्ट हेतला फॉर द फर्स्ट टाइम कोठी ना 11 5 ईयर हला तो 11 5 ईयर प्लान केते ना 2007 रो 2011 2007 रो 2011 निकला 11 5 ईयर प्लान तापर 12 5 ईयर प्लान एटा हला लास्ट 5 ईयर प्लान तापर आसी गला कि ना नीति आयोग बुझी होची ना बुझी होनी तापर आसी गला नीति आयोग ठीक अछि एटी तार एक्सप्लेनेशन लिखा जे इंक्लूसिव ग्रोथ गोटे ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेटेड इन 11 5 ईयर प्लान हला 12 5 ईयर प्लान रे क्वेश्चन पचारथिला प्रीवियस ईयर पचार देइथिला 12 5 ईयर प्लान रे कोन हेतिला 12 5 ईयर प्लान थिला मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ एटा 12 5 ईयर प्लान थिला जोटा लास्ट 5 ईयर प्लान ठीक अछि ता नेक्स्ट क्वेश्चन as per the multi-dimensional poverty index पुनी poverty पर क्वेश्चन आछि released by Niti Aayog in November 2021 which state has the lowest share of the total multi-dimensional poverty in India एटा देखो current affair जो माने हम पढिथिबा आसीबो जे OPSC कथा कहबा current affair से अपन जीके टुडे हला जीके टुडे हला और किछि स्टैंडर्ड जेंति किछि बिला स्पीडी मैगजीन मध्ये पढंती हला तो एमदी स्टैंडर्ड किछिटा current affair पढिबो बेसी माने अधिक पढि दबार नै कारण current affair एंति गोटे जिंस जदी पढिचो कर पारिबो नहले नै हला
तो रिविजन जति करि परिबो करंट अफेयर तो हमको सेटकी पढिबार अछि या करंट अफेयर क्वेश्चन आस्तला जे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अनुसार जोटा नीति आयोग पब्लिश करछि मु आगु ଗୋଟେ क्लास कहितली नीति आयोग विषय पढला बेले जे नीति आयोग क्यों क्यों रिपोर्ट पब्लिश करे ସେଇଟା को हमको देखिया पड़लो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ना कोन करे आउ कोन कोन आज ए जाय के समस्त देखिबे जे नीति आयोग रो कोन रिपोर्ट अछि से जो नीति आयोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करे କାହାର ସେ ଆର ଟୋଟାଲ ପୁଅର ଅଛି ୟାର ଅଛି କଣ ବି ଅଛି ହେଲା ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଛି 2021 ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଏଇ ଇୟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 2021 ଗଲେ 2022 କୁ ଯିବା ଆମେ ପୁଣି ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସିବା ତ ହେଲା କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଅଛି 76 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तो क्या होची को ईयर 2022 केबे हेतला एग्जाम डेट अक्टोबर 2022 हेतला एग्जाम ना एटा एथि में लिखु जे क्लैरिटी लागो जे हम को ईयर एग्जाम करछ विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन ऊपर पचा इन्फ्लेशन कोन परसिस्टेंट राइज ऑफ जो गुड्स एंड सर्विस रो प्राइस जेतले परसिस्टेंटली राइज करिवो तब होला इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया consider the following statement consider karo in May 2016 RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible implementation targeting framework under section 45ZA the central government in consultation with the RBI determine the inflation target in terms of the consumer price index once in 5 years. On March 31, 2021, the central government retained the inflation target of 6% with the tolerance band of plus minus 2% for the next 5-year period, April 1, 2021 to March 31, 2020. I mean, maybe inflation concept it is bit difficult to answer the questions that comes in the year 2016 in the year 2021 तो ये सब जिन के असुविधा हुए किंतु स्टिल जब करेंट अफेयर पढ़थिबा बेटा कवर करी हबो हला फर्स्ट ऑप्शन ठीक अछि जे May 2016 RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for implementation of the flexible inflation targeting framework এটা ঠিক अछि section 45 ZA central government in consultation with the RBI कौन करे एटा आरबीआई सहित मिसी हाँ इन्फ्लेशन टार्गेट करे इन टर्म्स ऑफ द सीपीआई वंस इन 5 इयर एटा भी ठीक अछि एटा इन्फ्लेशन पड़ितले एटा स्टैटिक पार्ट रो आसी जी हला तो 1 एंड 2 आंसर हमर हबो तीनटा भूल अछि
ହେଲା ठीक अच्छे एटा करेंट अफेयर रो क्वेश्चन टा आछि तापर कोन होची which of the following statements are true in relation to G20 New Delhi election एबे कोठी G20 बुझी जाइथिले G20 एबे रिसेंटली G20 हेची ता विषय G20 हला G7 हला ए सब जिंस पढिया को पढियो बुझिला ना बुझिलानी हला which of the following statements are true in relation to the G20 New Delhi declaration ए G20 ऊपर हमर आउट सेशन आस्तला आपण समस्त देखि परिबे all 83 paragraphs of the 2023 G20 New Delhi leaders declaration were anonymously approved. It did not feature the conflict in Ukraine and its subsequent economic implication. The declaration stressed the urgency of mobilization of United States $4 trillion per year for clean energy and technology by 2030. देखो तो गोटे ऑप्शन एमती ये दब माने गोटे नंबर्स दब ए सब प्राय जिन सब भूल थाए जो 3 एथरे माने भूल थाए किंतु एथरे किंतु 3 टा कोन अछि ठीक अछि किंतु एटा काटिबो नाही कारण केते ओडे जदी एग्जैक्ट नंबर दे थाए तो पिला मन को डाउट थाए जे एटा रॉन्ग हितबो ना एटा रॉन्ग हि थाए एटा ठीक अछि इट डिड नॉट फीचर द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड इट्स सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन एटा भूल अछि तो आंसर कोन हो जे ना सेतले G20 टा इंडिया रे होतला बोली न्यू दिल्ली रे एटा न्यूज़ रे थिला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पीजी क्वेश्चन Manreka is recognized as core of the core scheme for achieving sustainable development goal. SDG report question asked. The Manreka was reported in the voluntary national review 2017 by Government of India for its contribution to achieving which of the following SDG. तो जेहेतु मनरेगा कौन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है तो निश्चित जो कर्म नियुक्ति रोजगार योजना तो ये जो मनरेगा है तो क्यों क्यों एसडीजी को डायरेक्टली अचीव करछि फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजीज डायरेक्टली को कोटा करछि हमको कहछि एसडीजी जो 12 टा एसडीजी जो 17 टा अछि सब जाक मन रखिया पड़िबो एटा को कोटा ये करछि ना बी देउछि आंसर 134 नो पॉवर्टी जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटी हला हंगर पई एटा किछि करो नाही हला तो 134 सब जाक तो एसडीजी हला मनरेगा स्कीम रे जाउछि एसडीजी हमर इंपोर्टेंट सब 17 टा एसडीजी हम सब मन रखबार अछि तापर पुनी पॉवर्टी रे क्वेश्चन अछि Consider the following statement. Poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure and not on the income level. Consumption expenditure को हुए तापर it is difficult to access incomes of self-employed people, daily wages laborers, etc. And there may be large fluctuation in income due to seasonal factors. है ठीक अच्छे तो देखो हमको ऑलरेडी हमें पॉवर्टी रो कमिटी प्रीवियस ईयर रे तेंदुलकर कमिटी अलग कमिटी पॉवर्टी रो कमिटी ऊपर आस्तला हम कहली पॉवर्टी हला माने तार पॉवर्टी एस्टिमेशन एनएसएस ऊपर हमको पढिबार अछि तार बड़ कथा हो जे पॉवर्टी रो परसेंटेज केते ए लास्ट ईयर पुणी पचार देथिला जे को स्टेट रे पॉवर्टी अधिक अछि ताको सजा यूपी ना एमपी ना कोन पॉवर्टी ऊपर जेतोले करंट अफेयर रे अछि पॉवर्टी ऊपर स्टैटिक टॉपिक इकोनॉमिक्स रे अछि तो पॉवर्टी ऊपर हमको पढिबार अछि एटा जानि देखा हला तो एटा जे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज बीन बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल एटा करेक्ट हमरा कंजम्पशन के केते कंज्यूम करछि ताकू नेकी हमर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन हेछि it is difficult to access incomes of self-employed people, daily wages laborers, etc. There may be large fluctuation in income due to seasonal factors. Correct? Later. So both A and 2, 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of A. ठीक है Which of the following terms are components of the forex reserve? हला forex reserve की आसंदे बहुत इजी क्वेश्चन एटा ना कोन फॉरेन करेंसी asset आसे गोल्ड आसे एचडीआर आईएमएफ रो जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को है एचडीआर आसे रिजर्व इन द इंटरनेशनल रिजर्व इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 5 ताले एटा
ହେଲା इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जोड़ा रिजर्व छै एटा भी आसे तो ऑप्शन कोन सब जाक 1 2 3 4 ହେଲା क्वेश्चन नंबर 8 which of the following is not true in relation to the pm विश्वकर्मा एटा जेतला हम स्कीम रिलेटेड करंट अफेयर करतला हम एटा करिचे कोन ना एठी गोटे थिबो ऑप्शन जे लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना एटा की है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केतोडा प्रेसिडेंट कोन से स्कीम लॉन्च करनतनी कना प्राइम मिनिस्टर मोस्ट प्रोबब्ली करंती चीफ मिनिस्टर करंती कारण गवर्नमेंट कहले प्राइम मिनिस्टर को बुझाए बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हला तो एटा हबो तार राइट आंसर इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 81 गला 82 पुणी जीएसटी ऊपर क्वेश्चन आछि कंटीन्यूअस 2019 20 21 पुणी 22 ऊपर जीएसटी ऊपर क्वेश्चन आछि हला जीएसटी इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम of concurrency of indirect taxes where every transaction attracts central as well as the state ठीक अछि जीएसटी replaced a production based taxation system by a consumption based taxation system एटा चेंज हे जो प्रोडक्शन बेस्ड नो एटा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हला एटा भूल अछि it brings destination principle for cross border trading for which the poorer or consuming states are benefiting at the expense of more affluent and industrialized ones ठीक अछि ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट हला एटा होचे ओटे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एटा प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स 83 which of the following statement is incorrect पचारछि एबार द प्रोडक्शन लिंक स्कीम इनकरेक्ट किए ना आंसर अछि डी एटा स्कीम ऊपर क्वेश्चन आछि सब ऑप्शन आ पढुनी म तो स्कीम ऊपर कोन द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ओनली अछि कारण द स्कीम आल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल्स एंड मोर सब केवल फार्मास्यूटिकल में ठीक अछि तबे लास्ट क्वेश्चन होते एटा 85 नाबार्ड ऊपर क्वेश्चन आछि नाबार्ड ऊपर ऑलरेडी आगर क्वेश्चन आस जायतिला जे सेल्फ फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को किए सेल्फ फाइनेंसिंग करे 2020 ओसीएस देखो से क्वेश्चन बारंबार रिपीट होछ in discharging its role factor for rural prosperity nabard is entrusted with responsibility of पहला refinancing agency म अगर कहि छी तो आंसर एठी कोन दे छै ना ए डायरेक्ट the nabard provides refinance to lending institution in rural area सेम क्वेश्चन रिपीट होची तो हम यदि ध्यान देके देखिबा तो नेक्स्ट रे कोन कोन क्वेश्चन आउची हम ताको सेट करि पार बुझि हला ठीक अछि आज रो सेशन देखिथिबारु थैंक यू फॉर